Hello, welcome to our classes. I am Dr. KK Misra. यह वीडियो ट्यूटोरियल UGC NTA नेट पेपर फर्स्ट पर है, जिसमें कि हमने हायर एजुकेशन पर क्वेश्चंस लिए हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो ट्यूटोरियल में अभी हम गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस विल बी इन सीरीज इन ऑल 24 वीडियोस हायर एजुकेशन पर हम अपलोड करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ पार्ट फर्स्ट। और यहाँ पर आई हैव इंक्लूडेड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। These questions are really very important and ये रिपीटेडली कई बार नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। Now come to the questions. Collective responsibility is the hallmark of which form of government? आप यहाँ पर देखें तीन प्रकार के इनफैक्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिए हुए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल और मिलिट्री फॉर्म। So here correct option is A, parliamentary form, जहां पर की collective responsibility की बात करते हैं। Question number 2. In case of death, resignation or removal of governor dash acts as the governor. Options are A, the chief minister, B, the president of India, C, the speaker, D, the chief justice of high court. So obviously किसी भी स्टेट में अगर किसी भी गवर्नर के रेजिग्नेशन पर या रिमूवल पर या डेथ के बाद इमीडिएटली जो गवर्नर का काम देखते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं उसी स्टेट के, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर के बिहाफ पर गवर्नर का वर्क देख सकते हैं। 3. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द A, Prime Minister of India, B, President of India, C, Finance Minister, or D, Lok Sabha. So here correct option is B, President of India. इनको हम बेसिकली CAG भी बोलते हैं, CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड हो। क्वेश्चन नंबर 4. इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज, अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। So, like A, every adult of the age 18 or more has been given the right to vote. B, the Constitution guarantees fundamental rights of the people. C, the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. D, head of state is elected for a fixed term. So, here correct option is D, head of state is elected for a fixed term. 5. Indian Constitution reserves the residuary powers to, correct option is A, the Union. 6. The most controversial amendment passed during the emergency, that was 42nd Amendment. That correct option is C. 7. In India, freedom of press is, correct option is B, implied in the right to freedom of expression. जब हम freedom of press की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, दैट इज इम्प्लाइड। 8. The subject on which the state government enjoys exclusive powers are given in A, concurrent list, B, state list, C, union or residuary list. Correct option is B, state list. 9. The maximum strength of the Lok Sabha and the Rajya Sabha is, here correct option is B, 550 and 250. 10. The contingency fund of the state is placed under the, correct option is A, options are chief secretary, finance minister, chief minister और governor. So correct option is D, governor, क्योंकि यहाँ पर state की बात हो रही है। 11. Dash is the popular house of state legislature. Options are A, legislative assembly, B, legislative council, C, legislative sabha, D, जिला पर council. Correct option is A, legislative assembly. 12. How many seats have been reserved for the union territories in Lok Sabha? Here correct option is A, 20.
13. The President of India, who has some political differences with Prime Minister, was A. Zakir Hussain, Dr. Rajendra Prasad, C. F.A. Ahmed, that Fakhruddin Ali Ahmed, and D. none. So it was Dr. Rajendra Prasad. Correct option is B. 14. If a governor wants to resign, to whom does he address his letter of resignation? Options are A. Prime Minister, B. Home Minister, C. Chief Minister, or D. President of India. So it's the President of India. So यहाँ पर correct option D है. 15. The Legislative Council of a state can be abolished or created by the, here correct option is D, Parliament on the recommendation of the Legislative Assembly of the state concerned. 16. The sanctioned strength of the Supreme Court of India is, here correct option is D, 31. 17. Which of the following is not a union territory? अगर आप सबको देखें, सो दिल्ली, दामन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये सब यूनियन टेरेटरी, बट मणिपुर नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. 18. द गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रेसिडेंट. 19. What does the Article 352 of the Constitution contain? Correct option is A. Provision regarding declaration of emergency. 20. A parliamentary government cannot operate without, correct option is C, political parties. 21. Which one of the following is wrong? So सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट सी के. जैसे A, it is the duty of the chief minister to keep the governor informed of all the decisions of the cabinet. बिल्कुल सही बात है. B, the governor has the power to ask for any information from the chief minister regarding the administration of the state. Correct. D, as an agent of the central government, the governor may have to act sometimes independently of the advice of the council of ministers. But C, the governor is the real head of the state administration. That is wrong. 22. The report of the Public Accounts Committee is presented to, correct option is D, Lok Sabha. 23. Which of the following is not one of the fundamental rights? So right to equal pay for equal work for men as well as women. This is not a fundamental right. Correct option is D. 24. The Constitution of India is, correct option is C, a combination of rigidity and flexibility. 25. Decisions on question about disqualification of members of the Lok Sabha are taken by the, correct option is A, President. 26. The drafting committee of the Indian Constitution was headed by, correct option is C, B.R. Ambedkar. 27. Representatives of union territories in Lok Sabha are chosen by, correct option is A, direct election. 28. Which of the following statements is correct regarding the procedure of passing of bills in parliament? जो भी ऑप्शंस यहाँ दिए हैं अगर आप कंपेयर करें, so correct option is A, a bill pending in parliament shall not lapse because of the prorogation of the two houses of parliament. 29. The term of Rajya Sabha members was fixed by the, correct option is A, Constitution. 30. The main feature of presidential government is stability. Correct option is A. So this was all about this particular video tutorial. That was on governance polity under higher education. आई होप दैट आप सबको ये पसंद आया होगा, और ये पसंद आया तो हमारे वीडियो चैनल आर क्लासेस, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल आर क्लासेस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच.